Hello everyone, this is Abhilip from Part-3 and welcome back to my YouTube channel. तो previous class रे आमे resource and development ऊपर discussion करथिले. First आमे एठी resource कोना discussion करथिले, तापरे resource ର classification कि केते प्रकार resource अछि ताको आमे discussion करथिले. तापरे आमे discussion करथिले development resource ର केमिति development करि परिबो, कारण resource खाली रहिले तो हबनी, ताको development तारो माने प्रॉपर मैनेजमेंट प्रॉपर तार नो हाउ थिबा दरकार कि ताको केमिति हमें चेंज करके प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि परिबा आ से डेवलपमेंट रे को प्रकार डेवलपमेंट हबो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कारण आम पाखरे जेते की राइट अछि रिसोर्स को यूज करिबार सेही सेम राइट आम फ्यूचर जनरेशन पाखरे भी अछि आम प्रीवियस जनरेशन पाखरे भी थिला तो इफ वी हैव द राइट टू यूज समथिंग we have the right to use only we can't exploit it माने जदि हम पाखरे गोटे राइट मिलिछि हमको गोटे रिसोर्स व्यवहार करिया पे ताले आमे केवल ताको व्यवहार करिया पे हम पाखरे राइट अछि आमे ताको नष्ट करि परिबानी तो सेति पई रियो डियो जेनेरो रे गोटे एक्ट सबमिट हेतला 1992 रे जो थ्रे 100 एंड ओवर माने 100 रो मोर कंट्री डिस्कशन करथिले सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऊपर जो थ्रे 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आमर इंडिया रे अछि आउ अन्य कंट्री रे सेमति तांको हिसाब रे डेवलपमेंट गोल थिबो तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रखिबार मेन मोटिव होची आमे जे कोनोसी डेवलपमेंट करूचंती सेटा हमर डेवलपमेंट हो ठीक अछि किंतु हम फ्यूचर जनरेशन अफेक्टेड न हो तो तापरे आमे कोन डिस्कशन करिथिले रिसोर्स प्लानिंग रिसोर्स मिली गला तार डेवलपमेंट सिखि गले तार प्लानिंग माने जेतिकी रिसोर्स अछि ताकू जदि हमें मन इच्छा व्यवहार करिबा से सरी जीवो तो आमे ताकू प्लानिंग करिक व्यवहार करिबा के कारण कि केते बेले केतिकी अमाउंट हमें व्यवहार करिबा केते अमाउंट हमें कंजर्व करिबा से सब ऊपर प्रॉपर प्लानिंग होबा दरकार कि एई टाइम रे हमकु एतिकी दरकार अछि तो एतिकी हमें व्यवहार करिबा आउ एक्स्ट्रा यूज करिबा नाही आउ रिसोर्स प्लानिंग पर हमें डिस्कशन करथिले कोन ना रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया ओवरऑल वर्ल्ड रो प्लानिंग तो बुझी गले किंतु जेहेतु हमें इंडिया रे रहउचंदी इंडिया हमर नेटिव प्लेस हमें जन्म होइचंदी इंडिया रे तो इट्स ऑब्वियस कि we have to be careful about the resource planning in India जेहेतु हमें रिसोर्स इंडिया रे व्यवहार करिबा तो इंडिया रे केमिति रिसोर्स यूज होची ताको केमिति चैनलाइज करके प्रॉपर्ली यूज करा हे परिबो ता प्रति तो हमें ध्यान देबा दरकार ना तो रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया डिस्कशन थरी गला जोठे आमे कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस विषय भी डिस्कशन करथिले रिसोर्स को केमति कंजर्व करा हबो तार ओवर एक्सप्लॉइटेशन ओवर यूज केमति न करा हबो तापरे भी आमे ध्यान दबा बोली डिस्कशन करथिले तापरे एठी गोटे पैराग्राफ थिले जोटा को मो तम मानन को ऊपर छाडी दिली कि तम माने पढी कि कमेंट करिवो कि सेथिरे कोन अछि लेट्स डिस्कस कि से पैराग्राफ रे कोन अछि देन वी प्रोसीड एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोम advocate resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. तो इंटरनेशनल लेवल ले क्लब ऑफ रोम रिसोर्स रो कंजर्वेशन को फर्स्ट टाइम डिस्कशन करिथिला माने सिस्टमैटिक वे रे तापरे एम्फासिस दिया हितला एटा केबे हितला 1968 रे सब्सिक्वेंटली in 1974 Gandhian philosophy was once again presented by Schumacher in his book Small is Beautiful. और Schumacher Gandhian philosophy को describe करथिले कोठी Small is Beautiful जोटा तांकर Schumacher कर बुक थिला. The seminal contribution with respect to resource conservation at the global level was made by the Brundtland Commission report 1987. A Brundtland Commission report रे भी resource conservation ऊपर डिस्कशन हेइथिला. This report introduced the concept of sustainable development. तो sustainable development रा concept किए इंट्रोड्यूस करथिला Brundtland Commission रा रिपोर्ट एटा इंपोर्टेंट जिंस मन रखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो हमर 17 टा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि जो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट विषय एते पढिले सेटा किए स्टार्ट करिथिला Brundtland Commission report and advocated it as a means for resource conservation. आउ रिसोर्स कंजर्वेशन ना गोटे मेन होची कोन सस्टेनेबल डेवलपमेंट which was
subsequently published in a book entitled Our Common Future. ଆଉ ଯୋଉଟା କୋଉଠି ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ରେ ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ଯାହାର ନାଁ ହଉଛି Our Common Future. Another significant contribution was made at the Art Summit at Rio de Janeiro, Brazil 1992. ଆଉ ଗୋଟେ significant ଆଉ ଗୋଟେ important contribution କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ବ୍ରାଜିଲ ର ରିଓ ଡି ଜେନେରିଓ ଆର୍ଟ ସମିଟ୍ ଯୋଉଟା ହେଇଥିଲା ବ୍ରାଜିଲ ରେ ସେଇଠି ଏସବୁ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରାଯାଇଥିଲା ଯୋଉଟା ଆମେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ କରି ବି ଥିଲେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରେ। ତ ଲେଟ୍ସ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଟୁ ଦ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ दैट इज लैंड रिसोर्सेस। तो आमे कंजर्वेशन पढ़ीदेले रिसोर्स प्लानिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट वी नो एवरीथिंग अबाउट रिसोर्स आउ आमे एबे नॉर्मली ओवरऑल रिसोर्स ऊपर हमर आइडिया ही गला किंतु रिसोर्स कहिले सबुठु इम्पोर्टेंट जदि किछि जिंस अछि सेटा होछि लैंड रिसोर्स कारण जेकोनोसी डेवलपमेंट हो जेकोनोसी टेक्निकल चेंज हो जेकोनोसी इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज हो सब किछि लैंड ऊपर ही हो। इफ लैंड इज नॉट देयर देन वी विल नॉट बी एबल टू डू एनी चेंजेस इन द वर्ल्ड। स्पेस रो भी चेंजेस स्पेस रे भी हम जदि हमर लॉन्च करूचंदी किछि सेटा पे लैंड रो ही जाउची। तो somehow we can tell that ki land is the most important resource for every human being every species in the earth कारण अर्थ रो मुख्य जिंस मुख्य स्टार्टिंग मुख्य उपादान कहिले हमर जमी माने हमर लैंड सरफेस को बुझिबा। तो आमे लैंड रिसोर्स ऊपर डिस्कशन करिबा कि लैंड रिसोर्स कोन आउ ता भितरे आमे लैंड रिसोर्स रो केमिति यूटिलाइजेशन होजी कोन तार इंपोर्टेंस एवरीथिंग रिलेटेड टू लैंड आमे डिस्कशन करिबा। सो लेट्स बिगिन। We live on land. We perform our economic activities on land and we use it is in different ways. तो आमे बंचुचंदी लैंड ऊपरे आमे हमर जे कोनोसी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो ताकू लैंड ऊपरे करूचंदी आउ कारण हमर घर हो हमर कोनोसी दुकान की हमर बिजनेस की हमर किछि भी काम जे कोनोसी भी काम हो सेटा एग्जिस्ट करूची लैंड ऊपर ना ता कामटा होउची तो लैंड ऊपर ना। सो thus land is a natural resource of utmost importance। तो से कोन कहूची लैंड होची गोटे नेचुरल रिसोर्स जहार सबुठु अधिक इंपोर्टेंस अछि। It supports natural vegetation, wildlife, human life, economic activities, transport and communication systems. However, land is an asset of finite magnitude। तो लैंड कौन कौन सपोर्ट करे लैंड रे वेजिटेशन अछि लैंड रे वाइल्ड लाइफ माने वन्य जीव जंतु सब बसवास करंती ह्यूमन लाइफ माने मनीष भी बसवास करंती जे कोन से हम इकोनॉमिक एक्टिविटी हो लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज हो सेकेंडरी हो टर्शियरी हो तो से सब एक्टिविटी हम लैंड ऊपर करू। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन गोटे जगह रो जिबा आसीबा कि कोनोसी प्रकार एक्टिविटी एनीथिंग वी डू इट इन लैंड आमे सब जे कोनोसी काम करू ताको आमे लैंड सरफेस ऊपर ही करू। However, land is an asset of finite magnitude. Therefore, it is important to us to use the it is important to use the available land for various purpose with careful planning। तो it is the thing कि आमे बुझिगले कि लैंड आमे केमती व्यवहार करू काहे कि व्यवहार करू बुझिगले किंतु आम पृथ्वी तो बढ़ुनी जेति कि पृथ्वी साइज पैलेजोइक एरा मेसोजोइक एरा कि हमर तमे पास्ट को जोठी के भी जीव पृथ्वी साइज तो सेम अछि माने पृथ्वी ऊपर जेति कि लैंड थिला सेति कि अछि किंतु जेहेतु आमे धीरे धीरे चेंजेस करूचन धीरे धीरे डेवलपमेंट करूचन से हिसाब रे माने हमर लैंड यूज बढ़ुची जदि आमे गोटे पर्टिकुलर एरिया रे सपोज वी हैव ए लैंड दैट वी कल्टीवेट एंड आमे तादरु राइस पाउचंती धान चाष करके राइस पाउचंती किंतु आमे ता ऊपर गोटे फैक्ट्री एस्टैब्लिश करि देले आउ फैक्ट्री एस्टैब्लिश कला परे से गोटे 10 एकड़ 15 एकड़ जमी
कैप्चर हो गला से 10 एकर कि 15 एकर जमी जो रिसोर्स हमको मिलुथिला जो चाष है जो प्रोडक्शन हमर होउथिला सेटा मिलिबो कि मिलिबोनी तो एमती बहुत सारा इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत सारा डेवलपमेंटल एक्टिविटी होउचे जोटा हमर गोटे आडू डेवलपमेंट कले को साइड रो क्षति करूचे तो आमे जते लैंड ताको प्रॉपर्ली चैनलाइज न करिया प्रॉपर्ली यूज न करिबा प्रॉपर्ली मैनेज न करिबा ताले गोटे दिन एमती आसीबो कि लैंड ही सरी जिवो तापरे आमे खाइबा कोडू पाइबा चाष तो करबा को पड़िबो ना चाष न हेले तो खाइबा आसीबोनी तो चाष करबा पे लैंड भी तो दरकार लैंड जदि सब जाक अन्य पर्पस रे यूज हो तो लैंड आमे जो लैंड को चाष रे यूज करूछंदी ताको पाइबा कोडू इट इज द मेन कंसर्न तो सेहिति पई लैंड रो प्रॉपर प्लानिंग होबा दरकार इंडिया हैज land uses a variety of relief features namely mountain plateau plain and island तो इंडिया रे बहुत प्रकार रिलीफ फीचर अछि फिजिकल फीचर तमे क्लास 9th रो चैप्टर 2 रे पढी छ कि फिजियोग्राफी डिवीजन अछि इंडिया रो बहुत प्रकार आउ सब जगह क्लाइमेट अलगा सब जगह सॉइल टाइप अलगा तो सेति पई सब जगह प्रोडक्शन लेवल भी वेरी करिवो about 43% of the land area is plain ଆଉ ଆମର ଯେତିକି land area ଅଛି total 43% ହଉଛି plain which provide facilities for agriculture and industry ଆଉ plain area ରେ ଆମେ agriculture କରୁ जोटा ଆମର इंडो गैंगेटिक प्लेन इंडस गंगा और ब्रह्मपुत्र ର प्लेन ଟା ସେଠି ଆମେ agriculture करू ତ ସେଟା କେତେ 43% plain ଟା 43% Mountain accounts for 30% of the total surface area of the country and ensure perennial flow of some rivers. ଆଉ mountain account करे 30% total country ର ଆଉ perennial river mountain नु आसुची perennial river कोन जो river रा पानी केबे सरेनी always flow होता है काहे की flow होता है कारण mountain ऊपर ग्लासियर्स अछि आउ हमर झरणा गुडा अछि जोति पय पानी रो फ्लो केबे बंद होएनी ग्लासियर्स मेल्ट होउची ग्लासियर्स मेल्ट हवा फଳରେ पानी तयारी होउची तो पानी तयारी हेकी बहिबार लागिची तो सेति पय तार पानी केबे सरुनी प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोनॉमिक एस्पेक्ट आ ए जिंसटा हमकु माउंटेन गुडा जे तमे से जो 9th क्लास रे ही पढितिबो हमर मिडिल हिमालय रे बहुत सारा रीजन अछि बहुत सारा टूरिस्ट प्लेसेस अछि स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट वेस्ट बंगाल then there is a lot of places we can visit as a tourist place and that is there in the hill that is a hill station itself so mountain हमको गोटे बहुत भलो जगह दोची टूरिस्ट मानक विजिट पाए about 27% of the area of the country is the plateau region ଆଉ 27% plateau रे जाउची it possesses rich reservoirs of minerals fossil fuels and forest ଆଉ तमे जानि छ कि plateau region ने बहुत प्रकार मिनरल बहुत प्रकार फॉसिल fuels ଆଉ बहुत प्रकार रिसोर्सेस हमको मिले तो को जगह को जिंस सहित एसोसिएट जानिलो तो इट्स ऑब्वियस थिंग कि सब जिंस जेहेतु सब जगह रे मिलेनी सब जगह रे रो क्वालिटी अलगा सब जगह रो रिसोर्स अवेलेबिलिटी अलगा तो सब जिंस सब जगह रे मिलिबोनी कि सब जगह सेल्फ सफिशिएंट हे पाइबोनी तो ए सब को हमको प्रॉपर्ली मैनेज करके चलिबार अछि जदी वी वांट ए बेटर लाइफ वी वांट टू हैव ए बेटर लाइफस्टाइल सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक लैंड यूटिलाइजेशन लैंड को हमें यूटिलाइज केमती करबा हमें लैंड रिसोर्स विषय पढ़ी देले लैंड रिसोर्स काहे कि हम पई इंपोर्टेंट पढ़ी देले किंतु खाली जे लैंड रिसोर्स इंपोर्टेंट हेले हम पई हबनी हमें तार यूटिलाइजेशन केमती करबा हमें ताहा जानिथिया दरकार सो लैंड रिसोर्सेस आर यूज्ड फॉर द फॉलोइंग पर्पस लैंड रो यूज कोथि पई हुए ताकू फास्ट फोकस करो कोन कोन पई यूज हुए एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन एटा को भलो से मन रखियो कि लैंड रो यूज कोन कारण माने लैंड रो यूज बहुत इंपोर्टेंट माने पई आ एटा एग्जाम रे भी गोटे प्रोमिनेंट क्वेश्चन फॉर्म करि परिबो तो लैंड को पर्पस से यूज हुए गोटे होची फॉरेस्ट
आमर फॉरेस्ट कवर ह्यूज फॉरेस्ट कवर अच्छी अमेजन फॉरेस्ट विषय शुणी हिमालय बहुत सारा फॉरेस्ट अच्छी ता विषय शुणी तो फॉरेस्ट कवर सेकेंड हूँ लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन आउ किसी लैंड अच्छी जोटा आम कल्टिवेट करि पारुना सेटा कौन बैरन लैंड वेस्ट लैंड जोटा हूँ बैरन माने जोटा आम चाष करें माने जोटा पड़िया खाली पड़ी थाए आउ कौन लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस बिल्डिंग्स रोड एंड फैक्ट्रीज आउ जो लैंड गुड़ा को हमें एग्रीकल्चर पर्पज को छाड़ी की बाकी पर्पज रे यूज करछन लाइक वी बिल्ड बिल्डिंग्स वी establish infrastructural activities like road and factories so we use land there also and सेटा भी हमर लैंड यूज रे जाउची थर्ड थिंग इज अदर अनकल्टिवेटेड लैंड अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन ना परमानेंट pasture एंड ग्रेजिंग लैंड भूली जाए ऑनलाइन करे टोटल अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कौन कौन परमानेंट pasture एंड ग्रेजिंग लैंड जोटा कि आमको परमानेंटली ग्रेज करिया माने पशु पक्षी चरैया छाड़ी दिया है आउ लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एमती बहुत बहुत जगह अच्छी जोटा फॉरेस्ट तो नुह किंतु समहाउ सेठी गछ उठी कि गछ लगा है आउ सेटा माने गछ द्वारा कवर से लैंड विषय भी कह कल्टिवेटेबल वेस्ट लैंड आउ बहुत लैंड अच्छी जोटा कल्टिवेशन करी हबो किंतु हमें ताको कल्टिवेशन न करी ताको खाली छाड़ी देछंती से गुडे विषय भी कुहा होची तापरे कोन फैलो लैंड रे कोन आसुची ना करेंट फैलो जोटा रिसेंटली वो खूब कम दिन ने फैलो अछि फैलो माने कोन खाली अछि ताको के कल्टिवेट करू नाहंती left without cultivation for one or less than one agriculture year current fellow कोन ना गोटे वर्ष कि गोटे वर्ष रु कम एग्रीकल्चर ईयर पई जदि सी अनकल्टिवेटेड रहिला तार कल्टिवेशन न हैला तारे ताको हमें कहबा करेंट फेलो लैंड तापर आसला अदर देन करेंट फेलो गोटे अदर देन करेंट फेलो कोटा ना जोटा कीप इन माइंड अदर देन करेंट फेलो होची जोटा 1 to 5 ईयर जाए फांका थिबो माने करेंट फेलो होची लेस देन 1 आउ अदर देन करेंट फेलो होची 1 to 5 ईयर जाए फांका थिबो देन कमिंग टू द नेक्स्ट जोटा कि नेट सोन एरिया कोन द फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड ऑन व्हिच क्रॉप आर सोन हार्वेस्टेड इज नोन एज नेट सोन एरिया तो फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जोतरे क्रॉप हार्वेस्ट करा जाए आउ चाष करा जाए ताको आ जाए नेट सोन एरिया तो एतिक होची हमर कोन लैंड यूटिलाइजेशन लैंड रिसोर्स क्लासिफिकेशन केमती को पर्पस रे को रीजन पाई हमें लैंड को यूज करछु एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो रिमेंबर द पर्पस जो पर्पस रे हमें लैंड को यूटिलाइज करछु कोन लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन ने बैरन आसला आउ लैंड पुट फॉर नॉन एग्रीकल्चर यूज आसला तापरे फॉरेस्ट गोटे जोटा फर्स्ट पॉइंट अछि फॉरेस्ट आसला गोटे तापरे 3 नंबर आसला अदर अनकल्टिवेटेड लैंड जोथरे परमानेंट pasture आसुची लैंड अंडर मिसलेनियस आसुची कल्टिवेबल वेस्ट लैंड आसुची तापरे फोर्थ रे आसला फैलो लैंड जोथरे हम दी प्रकार फैलो लैंड बिसरे पढिले करेंट फेलो आउ फेलो अदर देन करेंट फेलो पढिले तापरे फिफ्थ रे आसला नेट सोन एरिया जोथरे हमें पढिले कोन फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जोटा कि हमरो सोन करा जाए हार्वेस्ट करा जाए ता विषय पढिले तो एटा गोटे पूरा 5 मार्क क्वेश्चन हे परिबो सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया लैंड हम जो यूज करूचंती तार पैटर्न कोन को पैटर्न विषय तुम समस्त जानि छ तो लैंड यूज पैटर्न माने आमे को प्रकार लैंड यूज करू माने केमिति लैंड को व्यवहार करू the use of land is determined both by physical factors such as topology climate soil type as well as human factors such as pollution
डेंसिटी टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस एक्सेट्रा आमे को पर्पस रे लैंड यूज करू टोपोग्राफी माने टोपोग्राफिकल फीचर आम जहाँ भी अच्छी क्लाइमेट आम जो सीजन चेंज हो से सब विषय रे सॉइल से भी यूज होटा भी गोटे इंपोर्टेंट जिनस एज वेल एज आउ कौन कौन पॉपुलेशन डेंसिटी गोटे जिनस टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी एंड कल्चर एंड ट्रेडिशंस आउ माने कल्चर और ट्रेडिशन माने कौन ना तो यही सब जिनस आम लैंड यूज को डिटरमाइन करे आमे को पोज रे को जगह लैंड को यूज करबा यही सब डिटरमाइन करे कारण टोपोलॉजी केते प्रकार अछि से डिटरमाइन करबो लैंड के माने कोठी कोठी केते परिमाण ने यूज हो क्लाइमेट भी सेमती सॉइल अनुसार भी लैंड डिवाइड हेछि कि को सॉइल केते की लैंड रे अछि पॉपुलेशन डेंसिटी जति अधिक हम कि कम हम से अनुसार भी माने डेंसली पॉपुलेटेड स्कार्सली पॉपुलेटेड ये सब जिनस हम तो यही पर्पस से आम लैंड को यूज करूचंती सो एठी देखो दीटा पाई चार्ट रे देइचे कि लैंड यूज पूर्वरु केमती थिला आ 1960 टू 61 भितर केमती थिला आ 2019 टू 2020 भितर केमती अछि एटा मे बी 2019 20 न है कि तम बही रे किछि अलगा अपडेट देइ थई पारे रिसेंट रो सो यू शुड एनालाइज ऑन दैट बेसिस तो दीटा पाई चार्ट रे देखिए कोन ना पूर्वरु गोटे पर्टिकुलर पर्पस रे केते लैंड यूज होतला आ एबे तादरे केते चेंजेस अछि माने बॉडी सो आज पई एतिकी पुणी देखाओ नेक्स्ट क्लास रे जोथरे हमें लैंड यूज पैटर्न्स इन इंडिया को डिस्कशन करिबा पाई चार्ट किछि तळे दिया है जे ताको एनालिसिस करिबा आ ता विषय रे डिटेल्स जानिबे कि इंडिया रो लैंड यूज पैटर्न कोन केते चेंजेस हेछि कोन से सब विषय रे हमें डिटेल ले बुझिबा दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू